Kurukshetra, Pratham Sarg, Bhag 3, the third part of the first chapter of Kurukshetra. In the last part, we stopped at और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का की व्यापक शून्य सा. And then we continue into रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी हो गई है लाल नीचे कोस भर और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गज बाजी के. It feels like the river of blood has made this earth red, miles deep, and on the surface, in the currents of this blood, are floating the parts of chariots and horses and elephants. किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग्य ही तो भाग्य क्या. And in spite of all of this, what are we left with except the irony of fate? चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया. I don't know what I wanted to attain with this war. Did I get it in my hands or did it fly away? सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर. It's true. Everything that I wanted to get out of this war, grasp in my hands, like my enemies, they have flown away into the ether as well. And all I'm left with in my hands are regret, irony, and sarcasm. यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ. उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है. This Mahabharata war was useless. And that is the venomous irony that I face. पांच ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का. Because of 5 intolerant men, the whole world was destroyed. द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम भोगे अहमय राज्य यह पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां. Just so that Draupadi, our wife, could dress well and look divine, and we could enjoy this land because of our ego. Because of that, millions and millions of people were left without their husbands and their sons. रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में. आदमी के खून में यह है सना और है इसमें लहू अभिमन्यु का. This land which is now covered in blood because of me, how will I find the strength to rule this land? It is covered in the blood of people, and in it is also mixed the blood of Abhimanyu. वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौंतेय दुर्वह भार से. Something in his mind fell on him and crushed him, and Kaunteya, Yudhishthira, could not handle the weight of this memory. दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में. Finally, his mind, which was trying to rationalize and justify the war and try to find some meaning out of it, when he remembered Abhimanyu and his death, even that small portion of his mind was crushed. भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा. And his heart was covered with such infinite pain that there was no foam that arose from this drowning. खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं. And he sighed loudly and said to Arjuna, I will go and talk to Bhishma Pitamaha. और हर्ष निनाद अंत शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में. And even now, the celebration and the happiness for him slowly died in this end of the world. And now the recitation of the whole poem once again, without explanations. रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी हो गई है लाल नीचे कोस भर और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गज बाज के. किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग्य ही तो भाग्य का. चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे
तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ, ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। पांच ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार सारे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे अहमय राज्य यह। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में यह है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं। और हर्ष निनाद अंत शून्य सा, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। In this part, Yudhishthira's deepest pain is explored. Yudhishthira talks about how this world is covered in blood. The ground seems to have become seeped in blood. Wherever he sees death and destruction. And then he thinks, was Mahabharata even successful? The war that was supposed to end their suffering had ended the world. He gets into a deep regret and guilt and starts wondering if all this could have been avoided if the five brothers did not crave the throne. And then finally he remembers the death of all people, and more specifically of Abhimanyu. And now he realizes that there is no escaping this guilt and he does not deserve to sit on this throne. All he says to Arjuna is that I need to go and speak to Bhishma, and leaves, and thus ends chapter 1.